Bumbada, welcome to 100 hours non-stop tribute to COVID warriors. Prosenjit Chattopadhyay এই মুহূর্তে in-house. Bumbada, welcome to 100 hours, 100 stars, non-stop tribute to COVID warriors. Welcome, Bumbada. You are our first star. তুমি আমাদের. Thank you. This is a wonderful initiative. Of course, the 100 stars we're talking about, the real heroes of India, the real heroes of the world, basically, the people who are really doing great job, great work for us. Yeah. And it's a very small contribution, but I think from my side, it's a big congratulations to you people thinking about this kind of because I've been always thinking that we should do something for the real heroes. We used to always say the soldiers are our real heroes, but today the police, the doctors, the people who are really giving services. When I talk to the police, they always say in the last that pray for us, So we need to pray for them, and we need to encourage them. We need to be stand beside them. It's a very good initiative. Thank you so much for inviting me. Thank you, Bumbada. So to start with, I'll briefly just say a few lines about this initiative. So basically, we are sitting at home and managing our lives, and we are safe at home. But there are millions out there who are actually there to ensure that we are least impacted. And they are, their lives are at risk, and to express some kind of gratitude towards them, this is an initiative to donate to PM Care Fund, basically. So, a initiative, from different walks of life, we are inviting stars, and of course, we are so lucky to have you, the industry, as we fondly call you, Prosenjit Chattopadhyay, ba Bumbada. আচ্ছা, tell me something to start with. Bumbada, এই যে নিকনেমটা বা এই যে পেট নেমটা, এই যে ভালোবাসার যে ডাকটা, এটা কত বছর ধরে তুমি শুনছো, বা কে প্রথম তোমাকে এই নামে ডেকেছিল, বা কিভাবে হয়? Do you remember? All your fans would want to know. Of course, I remember this. Let me first tell you, I'm sure যে যারা বাঙালি তারা আমার একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি, when I was around 4.5 years, সেই ছবিটা অনেকেই দেখেছেন, and ওটা এখন প্রায় টেলিকাস্ট হয়, রিটেলিকাস্ট হয়. The film was ছোট জিজ্ঞাসা. তো ছোট জিজ্ঞাসায় এই পাঞ্চ লাইনটা ব্যবহার করা হয়েছিল, বুম্বা পাঞ্চ লাইন। ইট ওয়াজ এ পাঞ্চ লাইন বেসিক্যালি। সো এটা কি হয়েছিল, যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, আমার আরো ছোট, তখন তুমি দেখবে বাচ্চারা নর্মালি একটা বুম বুম করে, একটা অভ্যেস আছে বাচ্চাদের। আর when my dad used to come back, আর উনি তো অনেকটা সময় বাইরে কাটাতেন বম্বে টম্বেতে, সো when he used to come back, আমি ওনাকে দেখে এক্সাইটমেন্টে বুম বুম করতাম, আর উনি বলতেন বাহ। সো ইট ওয়াজ এ গেম বিটুইন মি অ্যান্ড আমার বাবা, and so it was like বুম্বা। এটা করতে করতে মাই নিকনেম বিকেম বুম্বা, and I'm so happy যে এখন কত লোকের নাম নিকনেম বুম্বা হয়ে গেছে। মানে I know a lot of people, ইনফ্যাক্ট অনেক মহিলা আমি জানি যারা ছোট্ট জিজ্ঞাসা দেখেছেন যখন ছোট, তাদের খাতাতে লিখে রেখেছিলেন বুম্বা। তারা বড় হয়ে বিয়ে থা করে তাদের ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে, ছেলে হওয়ার পরে তার নাম রেখেছে বুম্বা। আই নো দ্যাট। মানে প্রসেনজিৎ বুম্বা মানে ভালো নাম আর নিকনেম এটা অনেকের আছে, বাট এই নামটা প্রথমটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল, এন্ড ছোট্ট জিজ্ঞাসাটাকে ইউজও করা হয়েছিল। So basically, how many names do you have? But we know the names that we know: Prosenjit Chattopadhyay, Bumbada. Any other names that we don't know of? আছে, মানে ইউ সি এই ফ্যামিলিতে আমাদের বিশেষ করে বাঙালি ফ্যামিলিতে এক একজন এক একটা নামে ডাকে। ওকে, লাইক আমার একটা মানে আমার বাবার মামা বাড়ি, দে আর ভেরি ক্লোজ টু মি, এন্টায়ার ফ্যামিলি, তাদের কাছে ইট ইজ অলওয়েজ বিন বুড়ুন। মানে ওই পুরো গ্রুপটা, মানে এখন আমার ভাইরা বড় হয়ে, সো ওই সেক্টরটা এখন বুড়ুন ডাকে। আচ্ছা, আবার তুমি দেখবে আদর করে এক একটা সেক্টর আছে যারা আমাকে বুম বলে ডাকে, মানে বুম্বাটাকে আরো শর্ট করে দিয়েছে। বুম্বাটা খুব বড় মনে হচ্ছিল, সো বুম্বাটা খুব বড়, তো এটাকে শর্ট কি করে করা যায়, সেখান থেকে বুম হয়ে গেছে। সো ইটস লাইক দ্যাট।
So your career has also taken a boom, you know. And Bombay ke liye, they people Yes. normally doesn't call me Prashanjit or Prashanjit Chatterjee. They all call me PC. It's like PC? PC, Okay. PC. So from अच्छा. দিবাকরের যখন আমি সাংহাই করতে যাই, हाँ so हाँ. of course ইয়ে বললো আমাকে, দিবাকর বললো যে স্যার আপনাকে আমরা কি বলবো, I said make it short. আর এখন জেনারেশন ওই স্যার দাদা এগুলো আমিও খুব একটা পছন্দ করি না, so let's make it PC. তো তারপর ওটা হয়ে গেল পিসি স্যার, স্যার পিসি স্যার আপনার শর্ট রেডি, so it's like something like that. Okay, since you know you have already taken up Dibakar Banerjee's name, and Shanghai was one of your Hindi films, of many films that you have done. कुछ इस फिल्म के बारे में बात करते हैं. Do you remember any memories during this time? And you had such a powerful role to play. You were so good, such a strong character. एक तो आप कुछ अगर Yeah, in fact, after a long time, it's a huge long time. I was not really prepared, and Dibakar came and told me to do this character. In fact, he came thrice to Calcutta to make me understand why. Well, my first question was why me? Like, why do Why you me? need me? Yeah. So as I always say, so Yes. it was he who took pain. Matlab, kyun? क्यों? And हाँ. I got really a huge appreciation from media to everybody, and everybody wrote why this man is not in Bombay. Though it was not like screen time was not huge, but I think that You made a particular great impact. doctor's वही, character, हाँ. it made a huge impact. And that credit goes to director, I always say, because Dibakar, I always feel, is one of the finest director we have in our country. और जितने भी फिल्म बनाई बहुत ही अलग किस्म के हैं और वो अलग सोच के हैं. इस फिल्म में मतलब बहुत the best part was like I had a huge love making scene with Kalki, which was a front page news. Yes. और वो सीक्वेंस ऐसा नहीं था कि वो उसमें सिर्फ प्यार था, उसमें ये सीक्वेंस भी बहुत ही अजीब सा था, उसमें गुस्सा था, उसमें फ्रस्ट्रेशन था, और वो सीन का कम से कम लेंथ था 4.5-5 मिनट का. और I still remember the Kalki felt like sick because she was doing with her emotions, and of course I'm mature. ऐसा भी हुआ कि मैंने बोला उसको रेस्ट दे दो, उसको हॉर्लिक्स पिलाओ, let her take rest. It was a huge impact of sequence. But finally the sequence got over. The best part, उसका इतना ज्यादा गुस्सा था, उसका इतना ज्यादा वो दिवाकर उसमें उतना तक हम लोगों को दोनों को पहुंचा दिया था कि after the shot मेरा मतलब I was in bleed. It was really bleeding. So that anger came, that was needed in the scene. So and it was wonderful working with Abhay, क्योंकि मैंने अभय जी का जो फादर मतलब धर्म जी के भाई, उनके पिक्चर किया था मैंने, वीरता. He was the producer that time. Yes. So अभय ने भी बोला कि सर आपने तो मेरा डैडी के पिक्चर किया था. तो मैंने हाँ, it was wonderful working with Imran. He was a very good actor. So we worked with a very, very comfortable zone, and it's very wonderful. It's a good experience working with Dibakar. Bhumada, you have at different stages of your life, you have worked with very senior actors like Feroz Khan, Pran Saab, Shatrughan Sinha for that matter. Mumtaz ji. Mumtaz ji. You played the role of a son, Mumtaz ji ke bete ke role nibhaya aapne. So I would like to ask you that we also, since you have a very good contact with the Bollywood fraternity, and we all know that, आपके साथ जो association है with Bollywood, it is fantastic. And also your pronunciation, your Hindi, the way you speak is also very smooth, unlike many other actors. Let's not compare, but I'm still mentioning. Why don't we see you more in Bollywood films? Why do we miss you in Bollywood? No, it is not that. You see, number one, after a long gap, after I did my Adhiya and all, I became so busy in Kolkata, so over commitment. तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बॉम्बे में जाके काम, मतलब मेरा कहने का मतलब एक चीज है, वो बहुत मानना पड़ेगा, क्योंकि आज बंगाल हो या मराठी हो
हम लोग सारे जो हिंदुस्तान में जो फिल्म बनाते हैं, हम लोग इंडियन सिनेमा बनाते हैं। Correct. और आज के डेट में मैं बहुत बांग्ला पिक्चर करके भी, व्हेन इट कम्स टू इंडियन सिनेमा प्लेटफॉर्म, हाँ. people call me, people take my name. So Correct. doing Bangla cinema, Bengal is not out of India. So my commitment towards my Bengali cinema was really huge. It was really huge. आप लोग जानते हो ये. और Yes. जब मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, तब मैंने शंघाई की. आज अगर मेरे पास कोई आता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर, नॉट दैट स्टार पर्सन, मुझे जैसा कि सृजित, कौशिक, या तो आज के डेट का जो हमारे शिवू, ऐसा जो हमें जो एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट काइंड ऑफ रोल करवाते हैं, अगर मुझे कोई ऐसा कोई रोल ऑफर करे जहां पे नॉट दैट स्टार, बिकॉज आज के डेट में आई कैन गो एंड टेक दैट रन टू बी ए स्टार. वो 25 साल पहले होना चाहिए था. Yes, 30 साल पहले. आज के डेट में मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई मेरे को एक्टर के हिसाब से ले, और मैं बहुत खुशी हो जाता हूँ जब मैं मिलता हूँ जितने भी सारे अपना मतलब आज के डेट के जो डायरेक्टर्स लोग हैं, ये हमारे जो नए जो लास्ट 10 साल की जो फिल्में हैं, सब फिल्म देखते हैं वो. एंड दे आर लेडी, देखिए सर, बहुत कम है जो स्टार से अपने आप को आपने निकाल के एक अलग जगह पे लेके गए. maybe your stardom. Yes. So they appreciate that because you see हम लोगों का क्या होता है, जो हम लोगों ने काफी वो मार दांगा, फाइट, एक्शन, रोमांटिक फिल्म किया, उसके अंदर से निकलना बहुत एक भारी, एक बहुत मुश्किल होती है. तो मैंने वो निकाल लिया बांग्ला पिक्चर के लिए बहुत साल पहले. तो मैंने अपना एक स्टाइल से, अपना एक ढंग से पिक्चर करता हूँ. तो मुझे वैसे भी बॉम्बे में भी अगर कोई यंग डायरेक्टर जो उस टाइप का चैलेंजिंग रोल अगर मेरे को कोई दे, जैसा मैं कर रहा हूँ एक विक्रमादित्य का, वो एक वेब कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बहुत चैलेंजिंग है कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है. तो मैं इंतजार करूंगा. मैं सुजीत का एक पिक्चर जो उन्होंने बनाए मैड्रास कैफे, उसमें मैं सुजीत ने मेरे को मेन विलन के लिए बोला था. मेन विलन. इट वाज अ ह्यूज बिग रोल, चैलेंजिंग रोल, वो साउथ इंडियन रोल था. तो मैंने कर नहीं पाया क्योंकि उसका वो पिक्चर थोड़ा सा डेट शिफ्ट हो गया था पूरा. सो मेरा भी डेट क्लैश हो गया था. तो ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं. बट हाँ, करूंगा नहीं ऐसा भी नहीं है आज के डेट में. बट आज के डेट में मैं कोई वो रेस पे नहीं जाऊंगा. आराम से जो मेरे को भी समझाना है, मेरे को समझना है, उस हिसाब से करूंगा. So no matter how long you have to wait, you will wait for the correct role. Correct director, correct role. Correct. Also, you have broken all the barriers. By that I mean to say that in the year of 2000, moti around 2000, while you were doing out and out commercial films, at the same time, Thik Tar Pori, you did a film called Utsav. So একদিকে out and out commercial ছবি, আর একদিকে parallel film. এবং যেখানে দু জায়গাতেই দুটো ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ সাকসেস তুমি পেয়েছো, how did you manage to do that is my first question. And second, do you think all the actors of this era should follow that? What do you think, Bumbada? Jenia, let me be very honest. I'm talking about my Bengal. I really feel proud today when I see my next generation. They doesn't say, but the kind of work they're doing, which is, you can't say it's a mainstream. Again, you just can't say that it is a very arty kind of a thing. Because when we used to do films, you have to understand there was a very specific mainstream cinema, commercial cinema, and a very specific art cinema. I don't know what is the meaning of art cinema. I still say that I don't know what is the meaning of cinema itself is an art. So, but people used to, ये art film के actors हैं और ये commercial picture के actor हैं. Thanks to, of course, to my friend Rituparna Ghosh, I always say that उसने पहले वो जो एक commercial film के actor और उसको उन्होंने तोड़ दिया. और I'm lucky that I had worked around 9 films with him. And why Utsav, when I did Chokherwali, it's the same time, same cast, me and Tota. The film got released was Ram Lakhon, which ran for 50 weeks. Same year. Same year. And again a Chokherwali, same cast, Prashanjit and Tota.
So my point is, I think I have started doing this experiment, or I can say, I have started exploring myself. कि मैं commercial picture भी करूँगा, but I had done two Buddhoda. I had done Mrityu Yes. Porno Ghosh. I had done Gautam Ghosh. I'm Yes. talking about those. I had done a film like Clerk, where it's Huh. only one character, and One that time I used to do full-fledged mainstream film. I did Bappa Ditto's film Houseful. So I used to always come out from that and do a different kind of a cinema. But today I feel good when there is no gap between this so-called commercial cinema and art film. And today's actors are ready to take these challenges, whether it is in Bangla, whether it is in Hindi. True. So I really feel good about it. Great, great. Once in our studio when we had a great chat session, you said that you are a man of festivals. I would remember that line. And by festivals, since you have worked with Buddhadev Dasgupta, Gautam Ghosh, Kaushik Ganguly for that matter, of course, আমাদের খুব প্রিয় Ritupurna Ghosh. So, how much importance do festivals hold, Mumbada? What do you think? Again, Jinia, which I told in your studio, I'm going to repeat the same thing. It is nothing. It's nothing very special. I always took some kind of a challenges within myself. Nobody has challenged me. Yeah. That if I have done this, now I need to do this also, right? So one fine morning, I understood that I'm very popular in Bangla, and I am blessed that I'm popular. People love me. People love my cinema for so many years. Mm-hmm. But what happens to that circuit? Hardly people know about it, right? Maybe Indian cinema lovers also know about myself, but what about Cannes? What about Toronto? They doesn't know. That circuit doesn't know me. So I purposely started working on that, and I had given my best. Yes, that's true. I had given my best. I did Doshor. I went to Cannes. I did Buddhoda Shopner Din. I went to Toronto. It was selected film. So then I still remember one day, Rituda, suddenly I met him somewhere, and he said in some festival he went and I was not there. So he came and told me, he knew about that my drive. He said, I felt so good. There was a session going on and somebody said, your actor Prashanjit, so he said, now people in sitting in a festival knows your name. Yeah. So my entire thing is that I take a kind of with the God's blessing, a kind of a challenge that I should also be known there at least. So I do need to do those kind of a cinema. Yeah. Okay, in this 100 Hours, 100 Stars episode, I want to know something. One character that has given you sleepless nights. Can you remember that? Plenty. 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 But of course. I mean, I can't specifically say one film, but yes, of course, one was Moner Manush. And of course, one because it was like out of my thoughts. Like I never thought I will be doing a Lalo kind of a thing. Of course, it was Subhash Chandra Bose. Again, of course. Yes. And another two films which I think was huge difficult for me. One was Doshor and one was Jatisha. Especially the Kushal Hazra. Right. Okay. What is your opinion on method acting, Mumbada? Do you follow that? What is your way of pulling off a character? What is your signature style? Well, I'm not sure. People say a lot of things about this methodical acting, and I think first of all, to be a good actor, which normally all my directors say about me, you need to be a good technician. You need to understand technique. You should understand cinema making. That's not your job maybe, but you need to know the camera. You need to know the lenses. You need to know the edit. You need to know what is lighting. So that is one thing from my childhood. I mean, I started my career very early. So it's been always my a kind of a learning process. I used to learn. I used to know. I used to sit by my cameraman. So as a technician, I can say I'm a good technician. People know about it.
Okay, Even yes. my director says he's a very director's actor. It's not director's actor. He's a good technician, basically. Technique. Because if you don't know the technique, whatever you are doing something out of your lens, it doesn't make sense. You need to know your lens, right? So this is Right. one thing. And second thing, method is something which is important. But end of the day, me as an actor, I am a very hardworking and I work with my emotions. So Yeah. my emotion is also it plays a huge role when I do a character. Okay. Would it be very difficult if I ask you to tell me 5 characters that you would say is very close to your heart? It's really difficult. You can understand. Difficult, you know. I But have done will be 343, 44 films. 343, 44 films. Yeah. Yes. So after that, it's really difficult. But yeah, again, I think few names I told you, like it's like Doshor is one of my very important film for me. It's very close to my heart. It's Moner Manush. It's Jatishwar, especially Kushal Hazra. This is 3, and Amar Shangi I can't deny, because today whatever I am from Amar Shangi. That, you know, white shirt, white pant. If you had missed, I would have reminded you. Yes. Yeah, so Amar Shangi I can't, because that's the film where from I became Prosenjit, and that's still recall value is huge of that Amar Shangi film. So that is one, and I would rather say, in fact, in the last spell, people have spoken. Moirakki is another very, very important film for me. Yeah, I worked with Soumitra Chatterjee. Of course, yes. अच्छा, एक चीज जो कि आप चेंज करना चाहोगे about yourself, about Prosenjit Chatterjee, one thing that you would want to change about yourself, वो क्या होगा, बताइए. एक चीज जो मैं चेंज करना चाहूंगा मेरे अपने लिए, मेरा थोड़ा सा मूड स्विंग. वो तो is like वो थोड़ा सा है, वो उसको अगर मैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज तो हो ही जाएगा. वैसे भी बहुत सारा चेंज हो गया, मतलब with my time, with my age, with my experience, with my maturity, seeing the world, there are a lot of changes, but I think I still need to change. वो जो एक समय होता है जहाँ पे वो Prosenjit comes in front of me. Yeah. I now need to. I try to remove it, but I now totally want to remove it. I want to be just a human being. So, क्या ये बोलना ठीक होगा कि this is one of your realizations maybe during this lockdown? You know, because we are realizing a lot of things, introspection हो रही है. What is that one thing, Bumbada, that probably made you realize during this time when you have a lot of time to think about yourself? Is there anything in particular that you have realized? You know, one thing is very sure about it, which I think I have been discussing with you all. Yeah. Practically, we don't have any power, right? The power lies with God. The power lies with nature. We need to respect. And not only it's Prosenjit Chatterjee, I'm very, very sure every human being coming out after this, yeah, we will see light. We will have a huge, good life. Yeah. I'm sure about it. I'm very positive about it. But when it comes, I don't think so. People will forget this, this time. Yeah. Yeah. So every person in his own way will have a change mentally, yeah, humanity-wise. There will be a huge change, and I really pray to God this change should come. This change is needed now. Yes. अच्छा, one thing that you have done during this lockdown period, घर पे बैठ के, जो कि आप कभी नहीं किया होगा,
वो क्या है, because everybody around the world, I'm sure you have been watching, checking your all these social handles. People are uploading videos about their cooking, dancing, few different set of skills. My God! But you tell me, कोई एक चीज जो कि आपने सीखा होगा शायद during this period, जो कि आपने कभी नहीं try किया होगा, वैसा कुछ है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो घर पे जो काम है ना, वो जैसे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किया नहीं। वो मैं बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो थोड़ा बहुत मैंने हाँ, अब अगर आप मेरे को पूछिएगा कि आप लास्ट 10-12 साल से मैं ये सब काम किए हैं, बिकॉज 14 दिन जो मैं आफ्टर साउथ अफ्रीका ट्रिप मैंने वापस आया था 19 तारीख, मैं सचमुच अपार्ट फ्रॉम माई टिफिन करियर मैं किसी का मुंह भी नहीं देखा। आई एम नॉट सीन। तो वो 14 दिन मैं एकदम अपना एक फ्लोर पे अटका हुआ था। सिर्फ मेरा लिफ्ट से एक खाने का डब्बा आता था, वो भी मैं धो के उन लोगों को वापस कर देता था। आई एम नॉट सीन एनीबॉडी फॉर 14 days, honestly. So there was no helping hand for me. So complete quarantine you were in. Absolutely. मैंने I used to call everybody and ask, जो हमारा पूरा टीम था, कि सब वैसा ही करो. So that was needed and it's nothing. I have done a great thing. And और घर पे काम करना, कोई भी काम, वो मुझे लगता है नहीं है कि आप जानो या ना जानो, आप कम जान सकते हो, आप आपको आता नहीं है, आपका प्रैक्टिस नहीं है, वो हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, you're not doing something big. ये भी काम है भैया, ये भी काम है। गाड़ी धोना, अपना चीज को साफ रखना, अपना वार्डरोब को ठीक ठाक से रखना, थोड़ा सा आयरन कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। I don't think so. Have you tried your hands on cooking ever during this time? Yes. Oh, मतलब okay. I'm not a good cook, but हाँ, मतलब हो जाएगा। Can you please खिला देंगे। कौन सा वो डिश था? Which one did you try? खिला देंगे, खिचड़ी विचड़ी खिला देंगे। हाँ, correct. Okay, we all want to know how, the entire day, how is it going? What's your schedule like? How is your day looking? So in a nutshell, if you can please tell me briefly that how is your routine now compared to your previous routine? How is your routine now? My sleep has gone haywire. Yeah? Okay. Time पूरा मतलब इधर उधर हो गया. And getting up late, sleeping around 4:35 in the morning. So are you watching? What are you doing to us? Absolutely. Yeah, watching or reading. But now you see, it's like it's something like, maybe mentally that आपका दिन थोड़ा सा कम हो जाए. आप लेट उठ जाओ तो वैसा ही ये. Watching films, reading scripts, reinventing myself, doing a little bit of gym, of course. That I don't want to miss. That's it. और क्या, थोड़ा सा गप्पे शप्पे फोन पे, मोबाइल पे. And I'm not too much of mobile guy, so it's not that I can talk to somebody for 1 hour. I'm not of that kind. So हाँ. तो आप फोन पे तो बात करते नहीं हो, वीडियो कॉल्स भी नहीं करते हो क्या किसी को भी, like your friends, your? बहुत ही कम. I'm not of that video और chat. WhatsApp में थोड़ा बहुत गाना वाना शेयर करना, वो सब है, बट वैसे नहीं है. बट yeah, you see, end of the day, you need to also entertain yourself, right? Yes. The way you want. हाँ. और हम लोगों का तो एक चीज है, हम लोग का पढ़ाई लिखाई मतलब फ्यूचर प्लानिंग, स्क्रिप्ट, ये वो. ये एक चीज है जिसमें काफी टाइम निकल ही जाता है. Okay, how I really want to know how you are pretty much active, I would say, on social medium. Thankfully, we are so thankful that you're pretty much active these days. But फिर भी मैं पूछना चाहूंगी that how much time do you devote on social handles, on social media? How much do you do that? दो चीज है. One thing is very sure that social handling is very important, but I believe I'm in between Mr. Bachchan and Suchitra Sen. So you know what I mean to say. Like Mr. Bachchan is like, why do we say? I mean, he is tremendous in social media, and also in some way I believe that. And at the same time, I also believe Mrs. Sen, to keep away yourself. Yes. So I'm in between these two. Yes. I appreciate this, I appreciate that. So I try to balance.
So if you follow there are certain things which is needed, because the communication system with my fans have changed. I Yeah. used to get fan letters. Letter. Pictures भेजना चिट्ठियां था मिलती थी. वो हाँ. तो वो Correct. change हो गया. So now it is so that much I will do. But ऐसा भी नहीं है कि too much of my Yeah. thing, because I still believe that Uttam Kumar's quote, don't, so, I believe few Give away. things. Yes. Yeah, don't give away. I mean, not too much. Not too much. So I try to balance in that way. But I love to go through everybody's social media, and I enjoy. Oh. Even I don't say anything there, I will personally WhatsApp them and say, "Eta खूप भालो आहे." You do that. Yes, you do that. Also, I really appreciate the fact that, you take out time to wish each and everyone in this industry, wish on their special days, on their birthdays, which is fabulous, Boombada. As in, who does that? This is really appreciate worthy. You do that. Honestly speaking, Jenny, if you ask them, and a few of especially my next generation, yes, I wish them at 12 o'clock. Social media comes next day. Okay. I normally try to wish them around 12:15 through WhatsApp, or maybe. Their data is made when No. They know this man does it, and I do it very honestly. And even if I forget sometime, maybe I miss it, then I also say that I'm sorry. Wow. So, you know what? Right away, I'm going to send you my birthday, because, I will wait for the wish coming from Boombada. My day will be made. I will do it. I do it in a very personal level. Yes. It's not social media. Okay, so I'm going to quickly एक छोटा सा game that I'm going to play with you. 100 hours, 100 stars में. Never have I ever. So you have to either say I have, or you have to say, you have to choose never I have, or I haven't, Okay. So either I have or I haven't. आप कभी बाहर, yeah, simple. So just a minute. Yes. I have or I haven't. Okay. তুমি করেছো বা করনি? Yeah. Okay. So only four liners. One, তুমি কখনো বাইরে বেরিয়েছো without bodyguards, just এমনি ঘুরতে mood হয়েছে, that's right, आप कभी बाहर गए हो? Have. You have? Can you please একটু বলো, I really want to know. No, plenty of times. Plenty. Yeah. I mean, motorbike নিয়ে বেরিয়ে, yeah. মানে, are you serious? Like, yeah, আমি motorbike নিয়ে বেরিয়ে গেছি। মানে আমার bodyguard-এরই motorbike, ওকে রেখে I took the motorbike. But are you talking about long time back? No, I'm talking about maybe 6, 7, 8 months back. আমি হেঁটে চলে যাই পল্লবীর বাড়ি। হেঁটে কি করে চলে যাও? বুঝতে পারে না, টপ করে চলে যাই। You are amazing. Okay. Have you ever done any role which you didn't want to, maybe, but just for paisa you did? For money I did. Yes? For money I did. Yes, that's what I said. Okay, you have. I have. Oh, okay. Good going. Have you ever thought of taking up any other profession apart from being an actor? Repeat the question. Have you ever thought of taking up any other profession? कोई और profession के बारे में आपने सोचा कभी, other than being an actor? Have. Yes. Boombada, this one I want to know. Please. I wanted to become an engineer. Oh. Yeah. Okay. So, as in, was that your ichha, Naki? As in your, or was your family? No. Our ichha. Either doctor or engineer. Okay. Have you ever fallen in love with any co-star? Quickly. Plenty. Okay. Have you done anything which is? Have you done anything? You are only laughing. You should have given the answer. Okay, have you done anything which is
which was so adventurous that you're very proud of? Anything adventurous that आपने कुछ किया होगा जो कि आप बहुत ही आप pride लेते हो उसके बारे में? Yeah, I have. You want to talk about it? Key code, as in key? The biggest adventure that I am working for 37, 38 years in this industry. The biggest adventure. Well I done. have the biggest adventures in this. Every minute is an adventure. Absolutely, absolutely. Great, Bumbada. It was lovely, lovely having you as usual. And also, during this time, people would want to know that what are the precautions you are taking? क्या precautions आप ले रहे हो ताकि आपके बात सुन के people do listen to you. So वो आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, प्रिकॉशन मैं जो ले रहा हूँ, जो सब लोग कह रहे हैं, सब लोग मतलब सोशल मीडिया ने, जो हमारे सिस्टम, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो करेक्ट, जो डॉक्टर्स जो बता रहे, ऑथेंटिक, वही कर रहा हूँ. वी शुड नॉट गो आउट. ये लॉकडाउन है और ये हमारी जिम्मेदारी है. इवन अगर आपको कहीं कभी बहुत इमरजेंसी के लिए जाना भी पड़े तो प्लीज आप लोग मास्क यूज कीजिए. और देखिए, ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए. मास्क यूज कीजिए, ग्लव्स हो सके तो यूज कीजिए, और वापस आके जितना तक हो सके हाथ धो लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसमें सैनिटाइजर यूज कीजिए. और देखिए कि घर से अगर कोई बाहर भी जाए तो एक आदमी, ऐसा नहीं कि पूरा सब लोग मिलकर चले गए कहीं, कभी कोई इमरजेंसी के लिए हो. क्योंकि ये जो कह रहे हैं हम लोग इसको मेंटेन, मैं अभी आज 19 तारीख हो गया, मैं साउथ अफ्रीका से कलकत्ता पहुंचा. 19 से अभी तक मैंने अपना गेट क्रॉस नहीं किया. तो ये नहीं है कि मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, मैं या तो मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ये सबके लिए कर रहा हूँ. सबके लिए. तो ये हमारा जिम्मेदारी है. सारा जो जिम्मेदारी कह रहे हैं, तो मैं एक ही चीज अवॉइड करने के लिए बोलूंगा कि बहुत कुछ ज्यादा चलता है ये सोशल मीडिया में. तो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारे स्टेट से दे रहे हैं या तो अपना इंडियन गवर्नमेंट से दे रहे हैं, जो ऑथेंटिक है उसी को मान के चलिए. ओवरडू और पैनिक मत हो जाइए. पैनिक होने की कोई बात नहीं. Okay. So on public request, I have to end with one dialogue जो कि आपको मैं request करना चाहूंगी. Please, actor cinema dialogue जेटा तुम्हें बोलबे, जेटा is close to your heart. So one dialogue, please, for all your fans out there. ये तो खूब मुश्किल. जी कनेक्ट. आज छोटा सा डायलॉग बोलता हूँ, वो तो आप लोग बोलते ही रहते हो, इसलिए इसको रिपीट ही कर रहा हूँ. एक मेरी फिल्म थी रिसेंट रिलीज की, उसमें वो ट्रेलर में वो डायलॉग बहुत हिट था कि रविवार पिक्चर का नाम था. उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि আমার মতন লোক জন্মায় তৈরি করা যায় না. So ये डायलॉग मेरा बहुत फेवरेट है. It should be close to your heart. I'm sure it is so you. It is so you. So, like we said, it's time to wrap up. And yes, we are inviting stars from all walks of life, and we are really, really thankful to you. You have given us time from your busy, should we say busy schedule? এখন busy schedule বলা কি যাবে? যাই হোক, বাড়িতে নিজে কাজ করো. ये ওটা বললে that's the wrong thing. We can't say it's a busy schedule. Yeah. So let's pray. Now I think that's the only thing we need to be busy praying for each other. We need to pray as much as we can. Yes. And I'm sure you people are doing this for a very good reason. And yes. There will be a QR, and please click it. And whatever you can, please donate. It's not for only Prime Minister's Relief Fund. It's for those heroes who have been working for us day and night, taking the risk. So whatever, it's a wonderful initiative. We all are there with you. So there are other 100 people who is going to come on this show. So please click your QR, and whatever your heart says, please donate it for the better reason, for the one of the best reason. So absolutely, Bumbada, thank you so much for mentioning that. And we at
Fever Network, we have taken up this initiative, 100 hours, 100 stars. We're inviting stars from different walks of life. And for any amount of donation, if it is possible for you, please scan the QR code flashing on the screen. And also you could click the link which is right at the bottom. And also you can, uske baad you can click on the proceed to contribute once the window opens. So again, please scan the QR code which is flashing on the screen for donation. Thank you, Dada, and yes. Thank you, Jineya, but थोड़ा सा आगे आ जा. Yes, Dada. अभी बता कि कल का प्लान क्या है? What is your plan tomorrow? बता नहीं पा रही है तू. मैं बताता हूँ. हाँ. मैं बताता हूँ अगले 100 घंटे का तुम्हारा प्लान क्या है. Oh, okay. Hello, friends, fans, and listeners of Radio 1 Fever FM and Radio Nasha. I'm Vikram Moses from Radio 1 Chennai. Hope you're having a great time watching all the great content on our social media handles. It's filled with stars, superstars, and legends, of course, all your favorite people. So if you actually like all the content, don't forget to hit the like button, the subscribe button, of course. Don't forget to leave your comments right below. But right now, continue watching. Have a great time. My name is RJ Urmin and welcome to 100 Hours, 100 Stars. मैं शो शुरू करने से पहले इस आवर की सेलिब्रिटी को बुलाने से पहले आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये जो स्पेशल इनिशिएटिव है, इसके थ्रू वी एम टू जनरेट मैक्सिमम डोनेशन टू द पीस केयर फंड, a dedicated national fund with the primary objective of dealing with any kind of emergency or distress situation like of course the COVID-19. करना क्या है, आपको स्क्रीन पर स्कैन कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड दिल से जितना आप डोनेट करना चाहते हैं बस डोनेट कीजिए. फिलहाल हमारे साथ इन दिस आवर 100 आवर्स 100 स्टार सेलिब्रेट करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके गाने, क्या कहूँ यार, इनके गानों की खास बात ये है कि इट्स लाइक दैट ओल्ड फ्रेंड, वो दोस्त जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो आप पर इमोशनल अत्याचार करेगा, जो आपको परेशान भी करेगा, अगर सामने ना हो तो आपके नयन तरस जाते हैं और उसके साथ वक्त गुजार लो तो कहने का मन करता है कि लव यू जिंदगी. अमित त्रिवेदी. Hello, Arvind. How are you doing? I'm doing good. How are you doing? डाउन टू अर्थ इंसान है, देखिए ये मतलब नीचे बैठे इतने डाउन टू अर्थ. It's so good to see you, Amit. And how are things? कैसे आप डील कर रहे हैं in this lockdown? खींच रहा है honestly, धक्का मार रहा है because अभी it's been like 40 days now since we are under lockdown. So 40 days मैं जिंदगी में कभी 40 दिन घर पे रहा नहीं हूँ ऐसे, तो ये पूरा एक्सपीरियंस नया है मेरे लिए. और वैसे तो घर पे रहने का एक अलग मजा है फैमिली के साथ, और घर में रहने का, घर काम करने का, उसका एक अलग मजा है जी. बट 40 दिन ज्यादा है. 40 दिन तो और ज्यादा. 20-25 दिन दिख रहा है, और तो it will be like 60-70 days at the end of the day. But as a musician, बेचैनी सी हो रही होगी because I know for a fact that you know you're a performer. आप अपने बैंड के साथ बहुत लाइव शोज करते हैं, तो क्या कभी मन करता है कि बस ऐसे ही खिड़की के बाहर जाकर जोर से चिल्लाए, Are you guys having a good time? मैं अपने बैंड को बहुत मिस करता हूँ, डेफिनेटली, जैसे आपने कहा. और मैं ये लाइव स्टेज पे अपने आप को फैंटेसाइज करता हूँ रोज रात को. मैं स्टेज पे हूँ और गा रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, और कुछ मस्ती कर रहा हूँ, कुछ गा रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ विद माय कलीग्स एंड फ्रेंड्स. तो वो बार बार वो विजुअलाइज करते रहता हूँ मैं रोज रात को, जस्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी. Do you remember the last concert that you did? जब पता नहीं था कि ये लॉकडाउन होने वाला है, लेकिन what was the last concert जो आपने किया? I think that was Zoom Holy Festival. Oh yes, of course.
तो वो जूम का था, तो दैट वाज प्रीटी गुड यार, बहुत मजा आया उसमें। दैट वाज द लास्ट एक्सपीरियंस जो इतना, Oh. जो यहाँ क्राउड देखा मैंने, लोग देखे मैंने, 10 मार्च था वो, और मार्च के बस उसके बाद फिर सब खत्म। अच्छा, ये बताए कि घर पर फिलहाल अमित त्रिवेदी द म्यूजिशियन, द मोस्ट लव्ड म्यूजिशियन, घर का कौन सा काम कर रहे हैं? कम ऑन, टेल अस दिस। किचन में हेल्प करता हूँ थोड़ी बहुत, बीच में डोसा बनाया मैंने, कुछ 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 बनाया मैंने, चाय बनाता हूँ, और थोड़े घर काम में हेल्प करता हूँ, थोड़ा ईज आउट करता हूँ, कोशिश करता हूँ ईज आउट करने की। पर अदरवाइज मैं अपना छोटा सा सेटअप लेके बैठा हूँ, अपना काम करते रहता हूँ कुछ ना कुछ, कीप माई सेल्फ बिजी विद सम वर्क, समथिंग दैट आई कीप क्रिएटिंग। और एटी आजाद हैज केप्ट मी बिजी, बिकॉज एटी आजाद मेरा नया म्यूजिक लेबल है, तो जिसको मैंने लॉन्च किया है, तो उसके चलते मैं काफी बिजी रहा हूँ इस लॉकडाउन में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका अभी एक गाना भी हमने सुना, आई सॉ वीडियो वेयर देयर वाज अ राधा कृष्ण परफॉर्मेंस हैपनिंग, इज दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? Yes, that one. That's the album is called Songs of Faith, जहाँ पर सब gods, it's like a little devotional space का है album, but in a different my spin to devotional music. It's not like so I created my own spin towards devotional music and genre. तो उसमें मोती वीराना करके पहला गाना निकाला, फिर राधे दूसरा गाना, तो 2 songs we just released during this lockdown. And third, also is going to be in the lockdown only, somewhere in between, somewhere in May. Oh, nice. Chalo, good. So then you're keeping us entertained as well. I hope you know that. Yeah. अच्छा, ये बताए that you know we're coming up. I mean we're doing this entire lockdown kind of a concert. ये जो एक special जो हम कर रहे हैं 100 hours 100 stars, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Because you are one of them. We are in this marathon and we thought of nobody else better than a musician like you to be part of it. Oh, it's a great thing. It's a great initiative. घर बैठे बैठे there is so much to do which I didn't realize, and these kind of things keep you going, keep you busy, keep you positive, and they spread happiness, uh, spread awareness, and a lot of things. So it's a great initiative. Obviously, it's a great thing to do. 100 hours, yeah. ये एक ऐसे इनिशिएटिव है where we're also asking people to donate while we are chatting. हमारे स्क्रीन पर right now itself there's a QR code where अगर जो हम लोग को देख रहे हैं वो स्कैन करे तो वो PM केयर्स फंड पर डोनेट भी कर सकते हैं. एंड आई थिंक this is when we need to show our responsibility, right? What do you think? Right. Definitely, this is the time where यही time पे you need to show you are a citizen of this country. You are यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे खाते हो. Definitely, you need to show some responsibility towards your nation and your country people. When people are in trouble, this is the right time to come and put your foot forward. So definitely, yes, it's a great thing to do. I'm very, very happy and would love to do anything that's required for me to do. Amit, apart from watching us live right now, social media पर people are doing a lot of new things. घर पर बैठे बैठे बहुत अलग अलग हॉबीज लोग सीख रहे हैं. आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा? मैं ऑनेस्टली अपने काम में ही सीख रहा हूँ. जो मैं अपना काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और बहुत सारे BST प्लगइन्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं. वो नई नई प्लगइन्स में सीख रहा हूँ. ये दौरान मुझे वो यूजुअली का वक्त नहीं मिलता. अपने स्टूडियो में बहुत बहुत तामझाम होता है, बहुत कुछ करना होता है. व्हेन यू आर इन द स्टूडियो देयर इज वे टू मेनी थिंग्स टू बी लुक्ड अपॉन. तो ये इग्नोर हो जाती है, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज पे ध्यान नहीं रहता. वो वक्त मुझे मिला है पूरी तरह से डिग इन करने को उसमें. क्या बात है, सुपर सुपर. और घर का ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आप मतलब हमेशा इतराते हैं, यू जिस सबसे पहले आप भाग जाते हैं? मेरा को बैक प्रॉब्लम है बोल के मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाता. Your wife is behind. Oh my God, she heard it.
वो मैंने एक बार कोशिश नहीं, एक बार की थी, एक दिन कोशिश की थी, हाँ. बैंड बज गई थी, तो वो नहीं हो Oh, पाया। damn. अरे रे रे हाँ, रे. Okay, we're going to play a very fun game with you now, Amit. And I hope you realize that इतने टाइम में मैंने आपसे एक भी गाना नहीं गवाया है. I hope you realize this is how गवाइएगा much I know you now. गवाइएगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो चांस ही नहीं, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, अभी तो कोई चांस नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए तो मैंने कहा that's how much I know you now. Everybody who knows हाँ, me taking an interview with Amit Trivedi, he will not sing for me. कितना भी मैं फोर्स करूं, उनको कितना भी गाने की इच्छा हो, मतलब I know that you want to sing, but I am saying that नहीं नहीं, don't, Amit, please don't sing, okay? उनको कितना भी इच्छा हो, मतलब वाह वाह, क्या कमाल हो, तुम भी This is my कमाल हो। reverse psychology working, man. ये बात आई Really. नो। Okay, my game to you is never have I ever. बहुत सिंपल है. मैं आपको कुछ सवाल ओ माय पूछूंगी गॉड, और डेंजरस आपको बस गेम 5 सवाल है. These are only 5 questions, okay? और आपको बताना है कि whether you have or you have never. Are you ready? है। आपके लिए सबसे पहला सवाल कि never हाँ, have I ever washed clothes with my hands during this lockdown. never। Not bad. Never have I ever सॉरी, वॉशिंग appreciated. मशीन है इससे, हाँ, मतलब वॉशिंग मशीन में डाला है, वॉशिंग मशीन में हाँ, डाल दिया है, पर खुद नहीं है। खुद नहीं धोए. ठीक है, चलेगा. सेकंड वाला, never have I ever, sorry, never have I ever appreciated a song that I actually did not like. Appreciate a song which I didn't like. No, never. I've never done that. I've Oh, you've always been honest. yeah, always. जो नहीं मतलब अच्छा लगता है seriously. वो उसको, जो नहीं अच्छा लगता है वो बाईपास हो जाता है, मतलब मैं इस पे ध्यान नहीं देता, वो जस्ट वो रडार सिस्टम से के आसपास ही नहीं आता, वो चलते रहता है कहीं आप बाजू में, इट डजंट अफेक्ट मी। No, I mean, like, if there is another composer who comes to you and says that Amit yaar, ye mera gana hai, just hear it. So if you did not like it, what do you say then? आई टेल हिम कि नहीं अच्छा, मजा नहीं आया। Wow, क्या बात है यार. हाँ। Very good, very good, very good. Okay. तीसरा वाला. This is kind of embarrassing, so I hope you answer it. Okay, you can't say I can't answer. Never अरे have I माँ, ever, never have I ever peed in a pool. thank God, never. I've never done that. Not even Never when done you were that. a kid. अब किड तो याद नहीं होगा, किड तो पूल नहीं तो बीच, किड था तभी पूल तो गया नहीं था, बीच पे जाता था, यूज्ड टू गो टू बीच। हाँ. बीच पे, यस, बीच पे किया हुआ है, बच्चा था तभी किया होगा, आई एम श्योर। पर उससे होश संभाला है नहीं, तभी तो नहीं। Wonderful. पूल से निकल Next के, one. पूल से अभी भी हाँ. अगर पूल से अगर डोर से पेशाब आई भी है तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट पूल से निकल के आई गो टू द टॉयलेट एंड देन कम बैक एंड जंप, तो वैसा है। कितने अच्छे बच्चे हैं आप, सच्ची. Okay, the next one is never have I ever cross-dressed in public. क्रॉस ड्रेस्ड मतलब आप लड़की के अवतार में आप निकले हैं. नहीं. नेवर कल लगता है आपको? डू यू थिंक सो? See, people who know you well know, they know you are a मस्तीखोर इंसान. ये जो आप ऐसे मतलब हाँ, भोलेपन का ये बना रहे हैं ना आप, मैं बता रही हूँ आपको. हाँ. नहीं पर आपके नहीं, मेरी मस्तियां अलग है, आपका क्वेश्चंस कुछ अलग ही खतरनाक है। कि नेवर एवर Okay, मेरा फाइनल सवाल है. Never have I ever abused during a live interview. नेवर, मतलब उर्मी, I won't say anything, even though I have a recording, but I. Are you serious? Are you Well, serious? it wasn't live, but yeah, I have, and it was very ऐसे निकल गया.
Seriously? Oh God, I'm sorry. Then maybe I have, yes. No, I don't this is what remember it. happens. This is what happens when Amit Trivedi and Amita Bhattacharya come together. Shah, he's the culprit. He's the culprit. You should blame him. Acha. Amit, really, this was so much fun. Thank you so much. And you're a sport. I really appreciate what you're doing. हमेशा ही मैंने आपसे कहा है कि वो कि आप जब भी तो मैं आपको कल एक मिनट आप गायब हो गए. अरे रे 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 रे. आपका Is it better now? वो कुछ सिग्नल ग्लिच आ रहा है. हाँ अभी ठीक है. Now अभी it's back. ठीक है? अभी ठीक है? Now it's back. Okay, You're super. back. You're back. Okay, so as I was saying that, Amit, seriously, I really, really love what you're doing. And I hope you know that कि जब भी मैं आपको interview करती हूँ, I interview you more like a fan than somebody who has to do her job, because that's how much me and most of me love your music. So thank you so much for always inspiring us. Thank you. Thank you. So much, Urban, for being sweet, always being so sweet and kind with your words. Yeah, and thank you for always singing as many songs as you can on my show. Even now you want to sing a song. थोड़ा कमीनी हुआ है ना that. You abuse, ladies and gentlemen, he abuse. But yes, I know that you want to sing a song, but please just don't, okay, Amit. Really, I don't want you to sing any song. Don't. I take that very seriously. I will not take. I take that seriously. No. Listen, if you want to sing, if you had to sing, what song would it be? You can just tell me what song it could be. Oh God, RJ लोग ना dangerous. Dangerous species. अरे एक गाना गा दो यार, मतलब इतने लोग आपको देख रहे हैं कि 100 स्टार्स अमित त्रिवेदी के साथ कर रहे हैं, और मतलब ऐसे कैसे चलेगा यार? मेरा अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, अरे जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे, हाय. बस खुश. अब मेरे अप्रेजल्स होने वाले हैं, मेरे अप्रेजल्स हो जाएंगे अब. Thank you, Amit, once again. Thank you for always being so wonderful. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. आपसे बात करके हमेशा मजा आता है. It's always a pleasure and fun to talk to you. I mean, keep it up. Whatever you're doing amazing. Thank you so much, and thank you for being a part of 100 Hours, 100 Stars. My pleasure. Totally my pleasure. It's a big pleasure to be a part of it. Thank you so much. Thank you. See you soon. हाय, मैं हूँ आपकी रेडियो की हीरोइनी रोहिणी 91.9 FM रेडियो नशा मुंबई से, and I do hope that you guys are enjoying 100 hours 100 stars, a non-stop tribute to our COVID warriors. अगर आपको पसंद आ रहा है जितने भी सुपरस्टार्स हमसे बातें कर रहे हैं, please like, share, comment and subscribe, and hey, don't forget to let me know if you like my chats with your favorite superstars.